Excellent. Crazy. Horrific. What the greater than equal to 0, I minus minus. Plus 1. Sum greater than 9, carry equal to true, sum equal to some percentage, 10 digits of I equal to sum if not carry. Not carry to break carry else. No, I mean, I don't think I need this things. So I can do something else. Digits dot append dot function C++. C++.com. Insert ITR position and then wait. Insert digits dot begin comma 1. Return digits. Oh. Else carry equal to false. Wow. First day, first mistake. Go to contest. Okay. Go tell 302. 62. Oh, नहीं साथ आ गए. Hmm. 302 virtual. Start practice. Join now. हाँ. We'll give 1 hour. भाई जितना होगा 1 घंटे में. Filled. So whiteboard. I have done 1 out of 20 questions till now. So let's see.
You are given a zero indexed array nums. In one operation, you may do the following: choose two integers in the nums that are equal, remove both integers, forming a pair. The operation is done on nums as many times as possible. Return a zero index integer array. Answer of size 2, where answer 0 is the number of pairs that are formed. Answer 1 is the number of leftover integers of doing the operation as many times as possible. अच्छा जी. You can use something as map by 2 hello plus equal to id dot second percentage 2 return here comma leftover. 3110. Oh. Okay, 10 होना ही चाहिए था. ठीक है, 01. That's good. And then we do submit. Wow. Max sum of a pair with equal. ठीक है. You are given a zero indexed array nums consisting of positive integers. You can choose the integers I and j such that I is not equal to j, and the sum of the digits of num I is equal to that of nums j. Return the maximum value of nums I plus nums j. Okay. Need a function auto to take int num should return. What should it return? As equal to 0. Wow. Num is greater than 0. As plus equal to num percentage 10. Num divide equal to 10. ठीक है. Return res. Map of int comma factor 8 and p. For auto id in nums mp of foo of id dot push back id ln res equal to -1 for auto id in mp sort id dot second dot begin comma id dot second dot end. ठीक है. If id dot second dot size equal to 1, then I will continue. Leetcode res equal to max of res comma id of 0 plus id of 1. Return res.
54 minus 1. Oh, what is LL? INT. ID dot second dot second. (54) minus 1. Submit. Stream health. Excellent. Nice. Accepted. There are given 0 index array strings nums where each string is of equal length and consists of only digits. Then you are also given a 0 index 2D arrays queries where queries I equal to k, trim I. For each query I, you need to trim the number to its rightmost trim digits. Okay. After trimming the last digit 1 the nums are 2 3. You are given a 0 index array of strings nums where each string is of equal length and consisting of only digits. You are also given an 0 index 2D array queries I is equal to ki trim I. Ki trim I. Okay, for each query I need to trim the numbers so rightmost trim digits. अच्छा, अगर 1 है तो rightmost 1 होना चाहिए. अगर ओके 3 है तो 3 होंगे, राइट? हाँ, 2 है तो फिर देन वी गेट 0 2 7 3 5 1. ठीक है भाई, समझ गए. Determine the index of kth smallest string numbers in nums. Okay, ठीक है. Determine the index of kth smallest trim number in nums. If two trim numbers are equal, the number with lower index is considered smaller. Reset each number's num to its original and return an array answer of same length as queries where answer is I is the ith query. ठीक है भाई. Nums of I dot length is equal to 0. Nums of I dot length is equal to 700. ठीक है. Nums are equal to queries I length. Queries dot length 100. Queries I dot length equal to ki. It's 1 to nums of length. ठीक है. Can you use the radix sort algorithm to solve this problem? What will the complexity? भाई ठीक है. I mean, I think this is कोई टीपी का लग रहा है सवाल, और टीपी का अगर लग भी रहा है तो nums of length, nums dot length 100. क्वेरीज तो छोड़ दो, अपन सारे के लिए निकाल देंगे. कैन dp of I comma j. What dp of I comma j represents is that what's the index of number what's the index of number that
आई मीन अगर हम आई डिजिट यूज करेंगे फ्रॉम द राइट, jth रैंक, ठीक है। Something similar to size. Vector range bpn plus 1 comma tp of I comma j, क्या बोल देंगे, using right most I digits we have to index which index for rank change. ये की हो सकता है कि for I equal to 0 y greater than I plus plus, है ना। Vector of pair of string comma int p और उसके बाद क्या कर देंगे अपन कि for auto it in v dot it, sorry, for it of it dot first ठीक है, इसको इंस्टॉलेशन कर देंगे। फिर आई टी डॉट फर्स्ट प्लस इक्वल टू आई टी डॉट फर्स्ट इक्वल टू लग जाएगा एन स्क्वायर ऑफ एन स्क्वायर ऑफ एन स्क्वायर। फिर उसको सॉर्ट करूँ भाई मैं, ना rather oh fuck 100 हो सकता है ना, तो we can't even do this non sort length equal to 100 नहीं, 100 के बाद 10 नहीं रख सकते अपन।
basically I think, I mean, the idea is that we know right कि अभी तक लीडिंग पे कौन चल रहा है, जैसे अगर मेरा बस लास्ट कैरेक्टर्स देखूं एंड देयर इज लाइक 99419986 5, सो द लास्ट कैरेक्टर मैटर्स क्योंकि अपन उल्टा चल रहे हैं राइट. एंड देन इफ दो के लास्ट कैरेक्टर हमें पता है ना, देन वी जस्ट गो बैक for them and then check कि क्या प्रीवियस में बराबर थे. से प्रीवियस में कोई एक प्रीवियस वाले स्टेट्स में मान के चल ये बड़ा था एंड ये छोटा था, देन ओके. एंड इवन अगर प्रीवियस में भी दो बराबर थे देन विल जस्ट चेक क्या कि प्रीवियस में अगर दोनों बराबर थे तो जो प्रीवियस में बड़ा था वो इस स्टेट में भी बड़ा होगा. If I'm making things correct. Fuck, bhai. 13 minutes left. Okay, so कुछ ऐसा चाहिए होगा अपने को कि वेक्टर ऑफ map of int comma int previous state for int I equal to 0 I less than n I plus plus है ना. तो previous state of I इक्वल टू आई हो जाएगा क्योंकि वी आर कंसिडरिंग कि सारे एम्प्टी है एंड देन अगर सारे ही एम्प्टी है देन जो छोटा वाला है दैट विन्स राइट. अब मुझे करंट स्टेट चाहिए तो वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ है ना पी VP ठीक है. तो मैं फॉर एंटी j इक्वल टू 0 j लेस देन j प्लस प्लस है ना. तो फिर हम क्या करेंगे कि VP डॉट पुश बैक nums of n minus 1 minus I n minus 1 minus I comma j. ठीक है. 0 के हाँ ये आ गया. फिर उसके बाद सॉल्व VP डॉट माइनस 0. हाँ तो नम्स ऑफ I minus 1 ठीक है ओ 0 VP डॉट बिगिन VP डॉट एंड यहाँ पे क्या आएगा अपने पास पेयर ऑफ int comma int p p1 पेयर ऑफ int comma int p2 यहाँ पे निकालना है if p1 dot first equal to p2 dot first return p2 dot second is this p p1 dot
second is less than p2 dot second. Return p1 dot first is greater than p2 dot first. Sorting हो गई. Map of int comma int. I don't think I need this. पता नहीं भाई. Sort vp dot begin vp dot end. We have sorted. मेरे को पता है कि भाई have a list. Now I have to club all those things, or take all those things. Map of intent, current state, the current rank equal to 0. Fair. If the equal to AP of J dot first MP of IT dot pushback MP of IT dot pushback. I don't know how this is ITX. भाई कितना गंदा है. PP of J dot second, ठीक है. Else ITX plus plus MP of ITX dot pushback PP of J dot second
for auto ID in MP vector or pair of int comma int comma v. We have v नहीं for auto ID in IP dot second v dot pushback previous state of LE comma LE sort LE v dot begin comma v dot end. ये हो गया, ठीक है. For auto P in V. For auto P in V. For auto LE in IT dot second V dot pushback P dot PS dot LE previous state. Current state. अच्छा. Current state of P dot second equal to current rank plus plus. अरे बाप रे बाप. Wow. Then for auto ID in current state dp of I comma ID dot second equal to ID dot first for then equal to previous state equal to current state. And now that's high vector into dp of n minus 1 n plus 1. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. ओ ओ ओ अच्छा सॉर्ट. ठीक है. यहाँ कर देंगे greater of pair of int. Wow, map of current state. ठीक है. current rank equal to 0, IDX equal to 0, ABS equal to 0 first, IDX equal to 0, GLS and N, CVS equal to MPG dot first, IDX dot second, previous equal to J dot first. ये भी सही लग रहा है. For auto MP vector of pair of intern comma into V. ठीक है. V लिया auto LN PS dot LE ठीक है. सॉर्ट कर दिया. और for P dot second इंडेक्स या ना तो CR प्लस प्लस ये हो गया. और फिर PS equal to वाओ. अब अपने को देना है वेक्टर इंट रिजल्ट. कि एक स्मॉलेस्ट प्रिम नंबर स्मॉलेस्ट चाहिए अपने को. ये शायद ग्रेटेस्ट है. इसको बदलने वाला बिल्कुल ही कोई मन नहीं है. फॉर
1 है ना, रैंक नहीं, id of 0 है, कॉमा len इक्वल टू ऑफ id of 1 माइनस 1, ये तो सिंपल है। अब हमें चाहिए रैंक। रैंक क्या होगा, हमने शायद कर रहे हैं ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट हो रहा है द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर, सेकेंड इज 2, तो n माइनस अगर रैंक कर देंगे फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर 1, तो n माइनस 1 माइनस 1, तो शायद इससे काम हो जाना चाहिए। and res dot pushback dp of len comma rank and return res। oh my god, भाई काम करेगा तो मजा आ जाए। वाओ 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 वाओ, ठीक है भैया। int value type of cost कर तो रहे हैं -0 a to I nums of static casting in C++। static cast डिक्शनरी एक्सप्रेशन, अच्छा तो ओपन करेंगे static cast, you want to do int and then nums of I, sorry, n minus 1 minus I, n minus 1, VP dot pushback, no matching conversion between I'm so fucking down. Thrust, where is the thrust? 47. Oh. FIRST. हो देखते हैं भाई। आउटपुट 3332 जो कि बहुत गलत है, and then our output is 22 which should be 3 and 0. Okay, ith smallest, first smallest number, second smallest number. यहाँ पे लॉजिक चेंज करते हैं, तो I just have to do this one
फिर यहाँ पे कर देंगे +1, तो ये सही रहना चाहिए देखो, राइट। और अपन इस लॉजिक को बेटा नहीं, यहाँ पे होना चाहिए, हमें चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। वेक्टर ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सही तो लग रहा है अभी। We got 2 oh my god, 1443, what the fuck. I represents length, G represents for int I equal to 0, I less than n, I plus plus vector of pair of int comma int vector pair dot push back. तो ये जा रहा है मेरा इंडेक्स, और उसके साथ जा रहा है ये सॉर्ट। जो छोटा नंबर है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, ये भी सॉर्टेड है। फिर मैप ऑफ इंट कॉमा इंट, current state, current rank, index map of int comma vector int previous जो है vp of 0 dot first, if previous equal to vp of j dot first, तो क्या कर रहे हैं, vp of index में पुश करते रहे हैं vp of j dot second, index प्लस प्लस कर रहे हैं, index vp of previous equal to vp of j dot first, ठीक है। for auto it in mp v previous states elements sort v dot begin v dot end of auto current state of current rank plus plus first smallest number, आता भाई तो
भाई पानी मिल गया था। तो दिक्कत क्या आ रही है? अपन ने लिया वेक्टर, राइट, फिर उसके बाद उसमें डाल दिया प्रीवियस स्टेट में जो सबसे छोटा है क्या है, लोअर इंडेक्स, ठीक है। तो इसके लिए हमने 0 to n में 0 डाल दिया, फिर वेक्टर में पुश किया राइट मोस्ट डिजिट, ठीक है। राइट मोस्ट डिजिट डाल दिया, सॉर्ट कर दिया, जो छोटा आया वो छोटा होना चाहिए, है ना। व्हाट इफ जो छोटा आया उन सारों के इंडेक्स ले लिया। अब इसमें जिसका इंडेक्स सबसे कम होगा वही तो होगा छोटा। मैप ऑफ वेक्टर एंड मैप डॉट पुश बैक, ये सारे कर दिया। अपन 2 बार एमपी ले रहेगा। प्रीवियस स्टेट, करंट स्टेट, मैप, ठीक है। प्रीवियस इक्वल टू वीपी ऑफ जे डॉट फर्स्ट, वीपी ऑफ जे डॉट फर्स्ट के बराबर अगर है तो अपन एमपी ऑफ इंडेक्स में पुश कर देंगे, अगर नहीं है तो इंडेक्स को करेंगे प्लस प्लस और एमपी ऑफ इंडेक्स में पुश कर देंगे इसके रैंक को, नहीं इंडेक्स को, राइट। इंडेक्स, हाँ इंडेक्स को पुश कर देंगे, कर दिया इंडेक्स को पुश, फिर प्रीवियस को सेट कर दिए। फिर अपन क्या कर रहे हैं, मैप पे जा रहे हैं, सॉर्ट वीपी में डाल दे रहे हैं प्रीवियस स्टेट और एलिमेंट को सॉर्ट कर दे रहे हैं, जिसका प्रीवियस स्टेट कम होगा उस इंडेक्स को दे देंगे अपन करेंट रैंक अपना 0 से इंस्टॉल था तो ये 0 होगा, फिर प्लस प्लस हो जाएगा तो सारे को हो जाएगा। फिर करेंट स्टेट में आएंगे तो डीपी ऑफ आई चूँकि है मेरा लेंथ, आई टी डॉट सेकेंड क्या है मेरा रैंक, आई टी डॉट फर्स्ट क्या है मेरा इंडेक्स। फॉर ऑटो आई टी इंक्वेरीज रैंक इक्वल टू आई टी 0, trim equal to length of rt1 minus 1. Res dot push back length comma rank plus 1, क्योंकि हमने इंडेक्सिंग माना है 0 से, after smallest number is at index 1, 0 0 1 2, so I don't even need this. Then do this. 0. कुछ तो गड़बड़ है भाई। चलो ठीक है, कुछ नहीं होता तो चलो 0 0 0 3 3 2 1 1 which is absurd भाई।
n equal to 0 for auto ID current state previous state equal to current state ठीक है few of element को rank दे रहा है ना this is element component rank GPT को देते हैं it's already too late don't any new approach just tell me where am I fucking up alright so going to be push back using n integer should be huh you are using n where you should be ठीक dp of n plus 1 and ranks होने चाहिए I equal to 0 I less than m and minus 1 minus I vp sort vp dot begin vp dot end j equal to 0 j less than m j plus plus vp is of size n अभी कुछ नहीं I don't think any improvement 2210 what 2210 30 oh my god let's fucking go bhai dp dimension character chup okay चौथा क्वेश्चन बाद में करेंगे भाई मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ वो छोटा सा क्वेश्चन है यू आर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स array nums and nums divide you can delete any number of elements from nums ठीक है return the minimum number of deletion you get as smallest element nums divides all the elements of nums divide if this not possible return -1 है 436 6 divides huh? nums divides अच्छा 2 2 6 8 you can delete any number of nums अच्छा जी भाई कुछ तो sieve of Eratosthenes क्या होता था प्राइम फैक्टराइजेशन sieve of Eratosthenes pronunciation
sieve or sieve of Eratosthenes. Eratosthenes भाई. अरे भूल ही नहीं. एराटोस्थेनेस. ठीक है भाई. एराटोस्थेनेस. एराटोस्थेनीज. एराटोस्थेनीज. ठीक है भाई, कुछ ऐसे ही होगा, यूज होगा, बट फक इट भाई. डेढ़ घंटा हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया. कल मैं बताता हूँ हाउ आई डू दिस. We better write this up. City, desktop, coding, red holes, as touch 1 January 2026 2026.md. Oh, nvim तो problems I intend to complete. Fuck. Reconnection successful, but मेरा stream ना छूट गया हो. स्ट्रीम है, ठीक है. अपन कर लें 4 3 + 1. नेक्स्ट 302 प्रॉब्लम. ठीक है. डब्ल्यू क्यों अभी के लिए करते हैं कंट्रोल W. हाँ ठीक है. ठीक है. ठीक है. क्या था टाइटल, क्या था? What the fuck? Codeforces. भाई div 3 करेंगे भाई. ये करेंगे 1059. Who's this running this game right now? एक दो तीन चार पाँच. चलो ठीक है. Do this. NVM. You are given an array of length n. Your task is to find the maximum possible average value of any subarray of A, formally for indices L, R. Define the average. ठीक है.
क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, 1/1 बट t out of the maximum value of average l comma r over all choices of r 3. हाँ जी, I mean just pick the maximum number, right? Average पड़ेगा क्या? If I have 4, complete test, receive problem. Okay, yes, yes, हाँ, वाओ. तो अपन करेंगे यहाँ पे int n, sorry we don't use int ll n, sin n vll, vector of ll n for auto k in for sin k sort I dot begin comma I dot end shout I dot back ln. Wow, q browse. Beautiful average. Codeforces beautiful average dot cpp submit. Happy New Year. Beautiful string. WQ MFM. अरे यार मुझे इस वाले में कैसे आना है, देखना पड़ेगा. You are given a binary string of s of length 10. Your task is to find any subsequence p of s such that the subsequence p is non-decreasing, that is each. ठीक है, let x denote be the string obtained by removing all the characters of p from s while preserving the order of remaining characters. The x must be a palindrome. You need to output any valued subsequence p that satisfies both the condition. If such a subsequence exists, output -1. हाँ अच्छा, if such subsequence, if no such, अच्छा ठीक है जी. अच्छा सिर्फ 0 1 हो सकता है ना. नॉन डिक्रीजिंग, आई मीन बोले ठीक है. 1 1 1 1 ठीक है. 0 0 ठीक है. 1 0 ना. कितना है? The first line of each station is an integer and the string. अच्छा n10 है. Okay, अगर n10 है then what's the problem you can do of n cube n की power 4 n की power 5 n की power 5 भाई ठीक है. n10 है तो then अपने हुए मसला ही नहीं.
same as auto string str ये रिटर्न करेगा अपने को bool 4 curve equal to str str dot empty return true. And then equal to size chart brief equal to SAR of 0 for auto 19 str. I don't need for auto ID in str if ID is less than ref, if ID is less than ref, return false, ref equal to ID, return true, auto bool string str bool if str dot empty return true. If str empty return true, empty equal to str dot size, empty I equal to 0, j equal to n minus 1, while I is less than j. If str of I not equal to str of j, return false, say I plus plus j minus bias return true. For int I equal to 0, I less than n, I plus plus. For int j equal to 0, j less than n, j plus plus. String trimmed equal to s dot sub str I comma j minus I plus 1. String trimmed equal to s dot sub str length. Okay. String remaining equal to s dot sub str 0 से remaining equal to this
डॉट सब str I कॉमा नहीं 0 से हमें चाहिए लेंथ I कितना है I सपोज 1 है तो 1 तक चाहिए ना I तक फिर हमें चाहिए रिमेनिंग इक्वल टू s डॉट सब str हमें चाहिए होगा j से लेके n minus 1 plus j n minus j तक n j अगर ये है सॉरी अपने को चाहिए होगा j plus 1 से लेके n n कितना है n है अपना 3 j है 1 अपने को चाहिए बस 1 j 1 3 n minus j minus 1 I feel n equal to 3 होगा और j अगर 1 पे है तो 2 minus 1 हाँ if boo क्या है trimmed and then boo 2 इसमें नहीं तो यहाँ पे रिटर्न होगा if a solution exists on the first line print a single register the length of the subsequence oh subsequence what the fuck भाई मैंने substring पढ़ लिया था I mean I'll still keep this 2 की power 10 1024 d u yeah d auto 2 3 equals to जाएगा ये तो एंड में जाएगा और इसमें होगा ऑटो इनपुट 3 और होगा idx और ये होगा void type something found equal to false if idx equal to n तो क्या करें if v2 v1 and then v2 तो in the first case we remove क्या कह रहा है ये the single length of the subsequent page on the second line print k distinct integers है कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ क्या यार फिक्र ही भी आना you are given a binary string s of length n. Your task is to find a subsequence p of s such that the subsequence p is non-decreasing. भाई कितने बंदों ने इसको सॉल्व कर रखा है अपने को देखना है
16,000, fucking 16,000 भाई. You are given a binary string S of length n. Your task is to find any subsequence P of S such that the subsequence P. ठीक है, वो तो समझ में आ रहा है. That is, column P is not greater than the next one. That X denote a string obtained by removing all the characters from S while preserving the order of remaining characters. Then X must be a palindrome. ठीक है भाई, ऐसे होगा लाइक. ठीक है. On the second character, print k distinct characters. I1, I2, IK. This is that forms palindrome P. ठीक है, तो क्या कर रहे हैं अपन? We do something as if out v1 dot size ln for i2 id in v3 out id out ln three. Not taken palindrome, then you can simply have v3 v2 है ना, v2 plus equal to s of idx. then कर देंगे v3 idx plus 1 v2 dot pop back. Try to take if v1 dot empty. yeah non decreasing है ना, decreasing v1 dot back is less than equal to s of idx. then v1 plus equal to s of rdx v3 dot push back rdx. Then we should do something like
how it's called, compd test run. Instead of okay, q if str.empty sq. Wow, yaar. Vector int v3 string v1 equal to v2 equal to zero. Okay, 2 3, then saying 3 2 3 4 2 3 4. टू थ्री आई मीन ठीक है आई गेट दिस पार्ट कि मेरे को यहाँ पे what the fuck is 9 is 0 भाई 1 का 3 चलो ठीक है एक्सेप्ट 3 का 3 4 5 3 4 5 is also fine 8 का it should have been 1 1 should at least 1 0 remove 1 0
6. So let's see, 1 2 3 4 5 6. Okay, ठीक है, accept. 6 guys is 1 2 4 6. I mean, it's all right. Where am I? Q. Beautiful string. Wow. देखते हैं भाई how people solved it. Oh no. So, oh, 1 minute. What the fuck? Anti-NCNN. The fuck? Wow. Wow. ठीक है भाई. चूतिया हो गया. मेरा सारा मूड खराब हो गया. विंडोज है, ठीक है. अरे यार, कितना टाइम लग रहा था मेरा स्टैंडिंग्स? वाओ, कितना माय समेशन इज माय समेशन भाई. प्रॉब्लम्स माय समेशन 1551. अच्छा ओके, ठीक है. आई मीन आधा घंटा. क्रेजी हो गया भाई इस हिसाब से. तो अपना you are given a 2 integers and b, you are allowed to perform the following operation any number of times including 0. choose an integer x such that अपने को 2 इंटीजर दे रखे हैं a और b, और to perform the operation any number of times including 0. choose an integer x such that x is between 0 to a. set a as is or x. So after performing the sequence of operation, one to value of a to become exactly b, find the sequence of at most 100 operation values. We say to obtain b from a using the allowed. किस में नहीं है भाई? थर्ड किस में नहीं है? 292929. अच्छा, किस कंडीशन में नहीं होगा? I don't know. ओहो, अच्छा. अगर a is less than b, then it's -1. a is less than b, last का भी -1 होगा. See, that's nice. And then we just check. This seems a lot easier. Thank God, bhai. Not really an a comma b, in a comma b, a is less than b. Out -1. What is this? -1. And then we return if a equal to b.
है output for each otherwise print integers number of operation on the second line print the chosen value of x u हाँ ठीक है ठीक है out 0 ln I just don't want to use vector ll res for कितने के है जी 189 for I equal to 0 I less than and it is on 32 I plus I just want them to be TLL ठीक है if and then bit A equal to A and 1 added vector and then bit B equal to B and 1 added vector ठीक है bit if bit A not equal to bit B तो अपन क्या कर देंगे भाई we'll just do bit A res dot push अरे back 1 and left die ठीक है out res dot size ln for auto it res out it out ln copy the test one wrong output दिखा साले ओके ठीक है 1248 है गुस्सा आ जाएगा मेरे को अभी 9 का क्या होता है 8 और 9 6 का क्या होता है 4 और 2 1 2 4 8 तो ठीक ही तो है ठीक है 13 का तो 0 है इसका -1 है 405 का 1 और 4 इसने खाएगा ठीक है एक सेकेंड 512 प्लस 256 16 18 530 प्लस 256 कितना हो गया आई डोंट नो भाई मतलब कुछ मेरे को तो सही लग रहा है भाई देख लेंगे सी ब्यूटीफुल exor.cpp समय if A is less than B, C out minus 1 ln equal to B
32. Test case is 6. 3, 4, 5, 6, 28, 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Output answer 1, 2, 3, 4, 5, 6. I know what I fucked up. This should be MSP. I equal to 31, I equal to 1 equal to 0, I minus if not, if one level if a and 1 I and then not of MSBA equal to I. Oh, if B and 1. W browse C beautiful jaw.cpp wrong answer in W2. Happy New Year bhai ji. Bas I don't just want to do this too. There is a permutation P. क्लोज कैसे करेंगे? ठीक है क्या अपने एनालिटिक्स है क्या? वाओ क्या है? दिस इज एन इंटरैक्टिव प्रॉब्लम. थैंक मेरे को आप लेट्स गो एक इंटरैक्टिव प्रॉब्लम पिक कर ही लेते. This is an interactive problem. There is a permutation P of length n
someone secretly choose two integer L and R and modify the permutation in the following way. For every index I in L to R, set pi to pi plus 1 as you know it notated you are given integer you are given an integer n denoting the letter of the permutation p. In one query you are allowed to choose two integer L and R and ask the sum of the subarray. L to R. Human query, ठीक है. You are tasked to find the pair L, R that was chosen to obtain no more than 40 queries. Binary search. बट मैं क्या था? There is a permutation P of length n. Someone simply choose two integers L and R. L is less than equal to R, it's less than equal to n. Modify the permutation in the way. Let 18 would be on 10 to the power 4. 2 into 10 to the power 4, right? Say 2 equal 2 into 10 to the power 4. We have 40 tries. First we'll find out R, then we'll find out L. R के लिए I choose नहीं R raw है. I mean we can first find L, right? L is less than equal to R, right? First we'll choose the point